नमस्ते, आई एम जेविन डॉक्टर सपना और आज का जो सेशन है हम डिस्कस करेंगे डिफाइन व्हाट इज़ एग्जीक्यूटिव, काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो आज डिस्कशन रहेगा कार्यपालिका क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और जनरल उसके कार्यपालिका के प्रकार। सो इम्पॉर्टेंट थिंग सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इट इज़ अ सेकेंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि फर्स्ट ऑर्गन क्या है, लेजिस्लेचर। द टर्म एग्जीक्यूटिव इज यूज्ड टू डेजिग्नेट ऑल दोज ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट whose business is to execute or carry out all the laws. The executive is the most important branch of the government. The legislature enact laws and the executive enforces them. What Garner says, the functions of the executive, however, is not primarily to deliberate, but to execute, enforce, and carry out the state will as expressed by the legislature and the Constituent Assembly and as interpreted by the court. So, what important another definition हम देख सकते हैं कि what Gilchrist say, executive is that branch of government which carries out or execute the will of the people as formulated in the laws. यानी बात ये है कि गार्नर कहता है कि एक व्यापक अर्थ में कार्यपालिका में वे सभी अधिकारी और एजेंसियां आ जाती हैं जिनका राज्य में संकल्प को लागू करने के संबंध है। यानी कार्यपालिका शासन का एक वह भाग है, वो ऑर्गन है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन करता है। कार्यपालिका शासन की वह एक धुरी है जिसके चारों ओर समस्त प्रशासनिक तंत्र घूमता है। गिलक्राइस्ट के वर्ड्स में ये सही है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। एग्जीक्यूटिव वर्ड को हम जनरली उसके दो मीनिंग्स बता सकते हैं। एक तो है बहुत ही उसका ब्रॉड मीनिंग, एक होता है उसका नैरो मीनिंग। अगर हम इसके व्यापक और संकुचित में, तो व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद तथा प्रशासकीय कर्मचारी सम्मिलित किए जा सकते हैं। और संकुचित अर्थ में कार्यपालिका में वे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो नीति निर्धारित करते हैं और योजनाएं बनाते हैं और कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। इसे राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। इस अर्थ में इंग्लैंड में सम्राट, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, और अमेरिका में राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। नाउ मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर हो गया, तो अब हम करते हैं द काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका के प्रकार। अगर हम इसके देखेंगे तो फर्स्ट वन इज द रियल एंड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, फिर हम देखेंगे सिंगुलर एंड द प्लूरल एग्जीक्यूटिव, फिर हम देखेंगे हेरिडिटरी, इलेक्टिव एंड नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव, फिर है पॉलिटिकल एंड परमानेंट, एंड द नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट्री एंड द नॉन पार्लियामेंट। यानी जनरली कार्यपालिका भी कई प्रकार के हैं और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है: राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका, एकल और बहुल कार्यपालिका, वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका, एंड उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका एक्सेट्रा। नाउ व्हेन इट कम्स टू, अगर हम डिस्कस करते हैं कि रियल एग्जीक्यूटिव क्या है, तो रियल है द एग्जीक्यूटिव विच एक्सरसाइज रियल पावर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, और नॉमिनल होता है वेयर इज अ नॉमिनल और ट्यूटुलर एग्जीक्यूटिव इज अ मोर कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हेड विथ लिटिल और नो रियल पावर, though the administration may actually be carried out in name. For example, in India, the cabinet is the real executive and the prime minister assisted by the cabinet exercise real power, though the government is conducted in the name of the queen. Second, singular and the plural.
जबकि जब हम इसको हम जैसे रियल को देख रहे हैं तो जनरल हम कह सकते हैं कि इन थ्योरी द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. इंडिया में हम क्या देखते हैं, प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ रियल. अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगुलर एंड द प्लूरल. अ सिंगुलर एग्जीक्यूटिव इज अ वन इन विच द अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल who does not share power with the others. The US president is an example of the single executive, and all the executive power of the federal government are vested to him. Now the next is the plural executive. The example, for example, जैसे कि Switzerland. The system in which executive power is exercised not by one single individual or by a team, but by a two or more individual possessing co-equal power is termed as a plural executive. The Swiss Federal Council is an example of the plural executive, and the system is neither parliamentary nor presidential. The supreme executive authority of the federal government is vested in a federal council consisting of 7 members elected by the Federal Assembly. The next is the hereditary, elective and nominated, यानी पैतृक. The executive may be hereditary or elective or nominated. में तो hereditary when the executive power passes from one person to another according to the principle of hereditary. जैसे कि the example is England. Then the president of the USA and India are the example of elective executive. They are indirectly elected by electoral colleges. The president of the Fifth Republic in France is elected by the direct universal suffrage. So the Governor General of Canada is appointed by the British Queen. So the governor of a state in India is nominated by the President of the Republic. And the next is political and permanent. The political executive is one whose tenure depends on the popular election. In a president system of government, the executive is elected for a fixed term as in a USA. In the parliamentary system, the cabinet, which in the real executive holds office during the pleasure of the legislature as a council of ministers in India. And the permanent executive continues to do function permanently until the age of retirement determined by law. For example, in India, the very official and functionaries, you can say जो functions हैं, like जो IAS officers हैं या जो military departments हैं या जो government में हैं, of the civil and the military departments who carry out the orders of the political executive constitutes a permanent executive. And then it come to the next step, parliamentary and the non-parliamentary, यानी the parliamentary executive responsible to the legislature. It remain in office only so long as it continues to enjoy the confidence of the legislature. England and India are example of this kind of the executive. In the non-parliamentary system, the executive is not responsible to the legislature. It hold office for a fixed term determined by the constitution of the state. The president of the USA may be cited as an example. So हमने क्या देखा general kinds of executive में. The first one is a real and nominal. The next is singular and the plural. Hereditary, elective, nominated, political and permanent executive. And the last one जो कि काफ़ी जगह देखा जाता है, that is a parliamentary and non-parliamentary. Thank you.